wait a minute, I'll start. Okay, so we did determinants pehle bhi, that the determinants are of the matrices are multiplying the first and the last ones, and then multiplying the second and the third elements and subtracting them, right? So हमारे पास जो determinants का formula आ जाता है, that is always AD minus BC, right? What we're going to learn is that how applying a matrix to some coordinates affects the coordinates, and then how we use determinants to find out the area. Uh, Applying, I'll start with the example. For example, you've got this coordinate that is your, you can say your unit vector, your unit or matrix 2 4 6 8 2 4 6 8. अब for example आपके पास एक point है that is on 1 1, right? यहाँ से भी 1 पे और यहाँ से भी 1 पे, तो इसके coordinates हम लोग क्या लिखेंगे? We'll write them as the 0 0. फिर आप ऊपर जाओगे, you'll get 0 1, then you'll get 1 1, and then you'll get 1 0. So applying a very random matrix, a 2 by 2 matrix, 2 1 3 4 onto it, what we get is 0 0 1 4 3 7 2 3. Okay, this is the matrix that you end up with when you multiply this random 2 by 2 matrix with the coordinate matrix. अब इससे हमारे points किस तरह shift होते हैं? We're going to plot them. Now हमारा पहला point जो था, that was 0 0, and it remains 0 0. So 0 0 हमारे पास नहीं पड़ा. Then you had 0 1, which was converted into 1 4. So your 1 4 goes up here. Then you had 0 1 1 that was converted into 3 7. So your 3 7 goes somewhere over here. And then your 1 0 was converted into 2 3. So your 2 3 goes somewhere over here. So जो आपके पास पहले एक square था, your this area, it is now converted into another shape that is, you can say, a parallelogram or a rhombus. It has stretched. Okay, so this is the shape that you end up with now. अब ये एक बहुत random matrix हमने apply किया था, and we are just looking at how it's going to affect our area and how we're going to find the area using the determinant. अब अगर हमारे पास ये stretch हो गया, तो अगर हमने इसका area find out करना है, तो how are we going to find the area of this green part is, हम लोग इसको parts में divide कर लेते हैं. For example, आपके पास एक ये point आ जाता है 7 पे, और एक नीचे point आ जाता है आपके पास, this was in 4 or 3, 1, this is on 3, right? अब ये आपके पास 2 points आ गए. अब इन 2 points के साथ हम लोग सारे areas निकाल सकते हैं, जो areas हमारे पास आ जाएंगे. ये वाला point अलग है और ये वाला point अलग है. So when we'll have to find the area of the shaded region, हम shaded green part का area कैसे निकालेंगे? We'll find the area of the rectangle that is this rectangle, and we'll subtract the areas of these triangles from it. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 triangles बन रहे हैं, squares बन रहे हैं, जो भी बन रहा है. We'll subtract the area of that, and then we'll get the area of the green part. So the area becomes, अब टोटल हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा था, तो उसका एरिया था 3 into 7, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स यही थे. उसमें से हमने सबट्रैक्ट करने हैं सारे एरियाज. अब सबसे पहले हमारे पास एरिया आ जाता है ट्रायंगल का, दैट इज हाफ इंटू 2 into 3. फिर हमारे पास एक आ जाता है रेक्टेंगल, दैट इज 1 into 3. और फिर उसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है, वेट अ मिनट, उसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल, दैट इज 1 by 2 into 1 into 4. Then we get another triangle that is 1 by 2 into 2 into 3, and you get another triangle that is 1 into 3, and then you get another, sorry, rectangle, and then you get another triangle that is half into 1 into 4. Yeah, when you look at the graph, you'll understand कि हमने कहाँ से निकाले. So this is just simply finding out the area of the shaded region. When we solve this what we get is 5. So हमारे पास 5 square unit square का हमारे पास जो है वो area निकल आया.
अब ये एरिया हमारे पास आया है ऑफ दी स्ट्रेच्ड शेप जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो शेप में बनाई थी उसका एरिया. अब how are we going to find this area through the determinant is what we're going to look at. जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया था it was 2 1 3 4. इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो what we get is AD minus BC. AD is going to 4 8 and BC is 3 into 1 3. So you get 5. आपके पास डिटर्मिनेंट 5 आ गया और जो हम लोगों ने शुरू में ग्राफ बनाया था इसमें जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था that was a 1 into 1 का स्क्वायर तो उस स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया 1. So what we're going to do is we're going to multiply our determinant with our area of the original shape. So हमारा जो एरिया आता था of the new shape is your determinant multiplied with the area of the original shape. So the area of new is determinant is 5 and the area of original shape is 1, so you get 5. तो हमें ये पता चल गया था अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो जिससे वो स्ट्रेच हो रहा हो या कुछ किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा हो into another shape, तो if we've got the determinant we can, if we've got the matrix we can simply find out the determinant and then multiply it with the area of the original shape जो कि would be a very simple shape, a square or a rectangle or a triangle. उसका area हम simply find out करके we can multiply it with our area of the original shape. So this is your final formula that you will be using in your questions as well. Okay, this was just a proof कि हम लोग area determinant से area भी directly निकाल सकते हैं. We don't have to go through the entire process of taking out the area of the rectangle first and then subtracting the area of the triangle and then finally coming up with the area of the new shape. So we can simply find out the area of the new shape by multiplying the determinant with the area of the original shape. सही है? तो अगर हम इस सारी चीज को जनरलाइज करें what we get is कि अगर हम किसी भी coordinate that is matrix that is a b c d को अपने एक यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो what we get is we end up with 0 0 b d a plus b c plus d a and c. ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. ठीक है, और इसी को जब हम लोग एरिया में पुट इन करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली खत्म एंड अप करते हैं हम हमेशा डिटर्मिनेंट में ही एंड अप करेंगे. जब हम इसको रेक्टेंगल माइनस ट्रायंगल करेंगे तो व्हाट द प्रोडक्ट दैट विल कम अप विद इज गोइंग टू बी दिस. ठीक है, इसका प्रूफ मैंने करके दिखा रही क्योंकि इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट ऑल. ठीक है, तो फाइनली हम लोग सिर्फ कंक्लूड यही करेंगे जो कि हमारे पास जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ न्यू शेप उसमें हम डिटर्मिनेंट को इस तरह यूज करेंगे कि विल मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद एंड देन मल्टीप्लाई दैट विद द एरिया ऑफ द ओरिजिनल शेप. सही है, और डिटर्मिनेंट को हम जब भी लिखेंगे उसके बहुत सारे वेज हैं लिखने के. यू कैन राइट इट एज द एरिया ऑफ न्यू शेप इज either you write it like this, m multiplied by area of original shape, or you can write it as determinant of m. ठीक है, इन दोनों में से किसी भी तरह लिख दो, that is fine. इन दोनों को हम determinant ही कहते हैं. So this is your final formula that you're going to use in your questions. अब going forward with it, इसमें कोई problem तो नहीं है? Okay, so going forward with it, exam type questions में theory questions में हमारे पास एक formula यूज होता है उसका proof मैं आपको दिखा देती हूँ. It's related to the determinants obviously. So it says that you have to prove that the determinant of AB is going to be equal to determinant of A multiply with determinant of B. That if we multiply the determinant separately, we'll end up with a product. Alright, so we have to prove this. अब इसके लिए we can just assume some things. For example, we can take our A as A, B, C, D and our B as E, F, G, H.
So what we have to find first is we have to find the product of AB. A product of AB would be A, B, C, D multiplied with E, F, G, H. And what we end up with is AE plus BG and AF plus BH and CE plus DG and CF plus TH. So this is our product of the product of A and B. Now what else do we need is we need the determinants of AB, we need the determinant of A, and we need the determinant of B. So our determinant of A would become AD minus BC, and the determinant of B would become EH minus FG. So the determinant of AB now would become AE plus BG multiplied with CF plus DH minus AF plus BH multiplied with CE plus DG. So you expand these and you get ACEF plus AEDH plus BCFG plus BDHG plus sorry no अब हमने माइनस करने बाकी सारे माइनस ACEF minus ADFG minus BECH minus BDGH. Alright, अब इसमें से हम like terms को with the same signs हम हटा देते हैं. ACF and ACF हमारे पास repeat हो रहा है and we've got BDGH and BDGH repeating. Alright, so we finally come up with the determinant of AB as we'll take the common out, and when we take common out of the four terms that are left is we'll end up with EH plus minus FG, EH minus FG plus BC into EH minus FG, and इससे you're going to end up with AD plus BC. Sorry, ये plus नहीं है, this is going to be minus. AD minus BC multiplied with EH minus FG. So this was what our determinant of A was, and this was our determinant of B. So therefore we prove कि हमारा determinant of AB is going to be equal to determinant of A multiplied with our determinant of B. So this is just one of the proofs that are needed in the questions that are going to be used in the questions forward, because आपके क्वेश्चंस में आएगा about how you're going to use आपको determinant of AB निकाल के वो आपसे कोई और किसी और का determinant या किसी और का मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं या anything like